लिखा हुआ है पढ़ना। Is it possible to design a rectangular mangrove road whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and width. ये रेक्टेंगुलर ऐसे होता है, क्या पूछा है? लेंथ And then ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू लेंथ इनटू होता है। एरिया में कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। Let the length is 20. Let the breadth be x. Then length क्या जाएगा? 800 इक्वल टू x इंटू 2x। 800 इक्वल क्या आएगा? 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 400 और x इक्वल टू आ जाएगा 400 का रूट। ठीक है, x इक्वल टू आ जाएगा 20 और 20 आप मुझे निकल गई। और लेंथ जो है वो आज क्या जाएगी? 2 into 20, that is number 4. Let the age of one friend be x. Then second friend be 20 minus, दोनों की मिला के 20 है ना, दोनों की। अब क्या लिखा? 4 year ago then 4 year ago it means age of first friend be x plus एगो बोला है ना, एगो का आगे है ना। Then second friend be 20 minus x plus, yeah, product of both age will be 40। ठीक है, x for question x plus 4 and 24 minus x equal to 40। ठीक है, 24x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 96 माइनस 4x इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 96 प्लस 20x इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर माइनस 20x and minus 48 equal to, ये 48 का होता है 16 into क्या कितना है? So the possible clear? ये रेक्टेंगुलर, ठीक है। आपको देगा पेरीमीटर कितना? 80 है ना।
इट मीन्स a प्लस b इक्वल टू, और सेकंड रहेगा एरिया, दैट मीन्स a इंटू b. Let the length of rectangular be a and breadth be b. ठीक है, एरिया कितना है 400 इक्वल टू a इंटू, तो a इक्वल टू आ जाएगा 400 अपॉन, ये देखा एक, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 480, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 b इक्वल टू 400. ठीक है, अब जैसे अपन ने दोनों तरफ का लिया ये कैंसिल, तो अब आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 80b प्लस 400. ये एक तरफ इसको इधर लेके आ गए, इक्वल टू 0. कितना आएगा देखो, 400 का करना मल्टीप्लाई, स्टेप फर्स्ट a इंटू सी 1 इंटू 400. अब इसको हम ऐसे ब्रैकेट करना है प्लस माइनस करने में कितना जाए, यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू यह आ जाएगा आपका कितना 40, यह आ जाएगा 40. बी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 बी प्लस 400 इक्वल टू 0. बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 400 इक्वल टू 0. बी इक्वल टू बी माइनस 20 और माइनस 20 बी माइनस 20 इक्वल टू बी माइनस 20 एंड बी माइनस 20. कितना बी इक्वल टू आएगा 20. Put the value of b in equation first. हो जाएगा a plus 20 equal to 40, a equal to 20. तो एक दोनों क्या गया, ठीक है, क्लियर.